different parts. First of all, we'll go with the introduction, then evaluation of the newborn, then general physical examination, then vitals, then anthropometry and head to toe examination, systemic examination, and gestational age assessment. Now, first we go with the introduction. Assessment at the time of the birth. As we know, we should know whether it's a term baby, then whether we have to know whether it's a preterm baby, whether it's a low birth weight baby, all these things has to be assessed. Then later onwards, tone of the child, tone of the baby, whether the child is hypertonic, whether the child is hypertonic, normotonic, okay, the flexion behavior. Normally when the baby is kept in the room or in the bed or in the bed sheet, a warm sheet, usually it attains a flexion position, okay. So that's a universal flexion of the newborn, we'll call it as. Then we have to look into breathing. Then we have to look into crying. Okay, these are the basic things. Now, when you look at all these things at the time of the birth, meantime you have to wipe the baby and you have to also wipe the baby and you have to dry the baby and wrap the baby. Okay, you have to wrap the baby with the warm towel. If everything is okay, hand over the baby to the mother and continue the routine care. This we have also seen in the last class. And if not, if these things are not, then bring the baby to the radiant warmer and wipe the baby and do the initial steps of NRP, neonatal routine. What do you mean by NRP? Neonatal resuscitation program. Is it neonatal resuscitation procedure? NRP. Okay, what we assess that time. Now, when we are bringing the baby and keeping the baby in the radiant warmer, what we have to assess is, we have to assess the breathing, we have to assess the temperature, we have to assess the airway, and also we have to assess the circulation. This is nothing but TABC. TABC has to be assessed. T stands for temperature, A stands for airway, B stands for breathing, and C stands for circulation. Okay, now the quick screen for the congenital abnormalities. Immediately you have to the congenital abnormalities, you have to go for the quick screening. Then the next step is you have to see the gender, sex of the baby, and also you have to note the timing of the delivery. Okay, so delivery time, that is also very important for different purposes. Now you have to assess the Apgar scoring. Apgar scoring at 1 minute, Apgar scoring at 5 minutes. If the Apgar scoring is less than 7 at 5 minutes, it suggests that no successful transition has been taken place. In the last class, we have seen in each step what are the aims. Like at the time of the birth, our aim is the smooth transition of the baby from the intrauterine life to extrauterine life. And if the Apgar score is less than 7, at the end of 5 minutes also, it suggests that in that 5 minutes, baby failed to adopt himself or herself or failed to transit from the intrauterine life to extrauterine life. So this is very useful, and this will going to decide whether you have to shift the baby to the ICU or not. Now, assess the success of transition from intrauterine to extrauterine life. Now, early newborn examination. We do it after the baby. Slide show नहीं हो रहा है ना? नो सर, अभी 4th या 5th खुली हुई है स्टार्टिंग वाली. अब आ रहा है? यस सर. Okay. So now early newborn examination. We do it after the baby is shifted to the mother. Mother is feeding the baby and then we do the examination. Look at the appropriate signs of the successful transition. Sex determination. ठीक है, पहले आपने एक बार जेंडर देखेंगे, उसके बाद वापस जब मदर को आप देंगे वापस सेक्स को देखना है, बिकॉज करेक्ट इफ यू आर रॉन्ग. कभी कभी मेल फीमेल फीमेल मेल हो जाता है, बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है. देयरफॉर अगेन यू हैव टू चेक द sex. Then anthropometric measurement. Then we have to go for the anthropometric measurement. Then examination of the congenital abnormalities and when to anticipate and look for. So these are the early newborn examination part. Now this part is very important. Now maternal history.
मेटरनल हिस्ट्री हम लास्ट क्लास में भी इसको देखे थे, ठीक है। अब हम क्या है लास्ट क्लास से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बताएंगे, ठीक है। ये इसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है। कभी कभी हमें पूरा न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन नहीं करना है, कभी कभी पूरा न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन करना पड़ता है, कभी कभी इतना ज्यादा मेटरनल हिस्ट्री पूछने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा हूँ इसको। अभी आज जो मैं पढ़ाता हूँ वो पूरा जो है पहला क्लास में पढ़ाया था, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा, दैट्स ऑल। So this is required when the baby is having some problem. The first one, the last class we have discussed, that is sufficient for a routine baby care. Routine baby care. ठीक है, आपको पक्का है कि baby is a term baby, no problem, there is nothing there is no complication at all. So that is sufficient. But in this case, you need this. Okay, maternal history. Now, when do we anticipate for congenital malformation? Okay, so one of the important steps that we will do in newborn examination is checking the congenital malformation. The question comes, why this congenital malformation comes? Congenital malformation starts from the fetal life itself. So that means there is some problem in the maternal part. There is some problem in the maternal part. In the first trimester. So what we are going to ask about the maternal history in the first trimester. First trimester is a previous sibling with the congenital history. That means if mother has already got another child and you ask the health of that particular child, whether there is any congenital abnormalities or whether there are any issues at the time of the delivery and later, all these things you have to ask first trimester. Second trimester you ask for the history. First trimester you also ask the history of abortions. If there is abortion and what is the cause, why it has happened, all those things. Then torch infection. You have to look into the torch infections. Then radiation exposure to radiation. Okay, mother is exposed to radiation or some radioactive drugs or different types of X-rays and all those things. Then any drug exposure. Mother is taking some of the drugs. It may be toxic drugs, antibiotics, and some of the aminoglycosides or some of the sedative drugs. So if the mother is taking, or especially non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID, okay, like indomethacin, etc. So this drug history, so these are the important points that you have to ask here in the maternal history related to first trimester. Maternal history related to second trimester. In the second trimester, usually in the 4th or 5th month, we'll go for a congenital anomaly scan to find out any, because by the end of the first trimester, the neural tube and etc. will be completed, and then the system differentiation will start. Organ differentiation will going to start from the endoderm, mesoderm, and ectoderm. So some of the structures are formed. So we will go for congenital anomaly scan, whether there is any problem in the heart, problem in the bones, or etc. Then in the second trimester, we have to see the screening test. Screening test for different types of markers. Different types of markers are there. For example, alpha fetoprotein. Alpha fetoprotein. Alpha fetoprotein is a very good marker for Down syndrome and so many other things. Not only Down syndrome, so many other problems. Congenital abnormalities. Many of the neural tube problems will have alpha fetoprotein. Raised alpha fetoprotein. Not only that, estradiol, one more marker. And likewise, the markers has to be asked. And you have to look into these markers, whether it is done, these markers are normal, markers are increased. That gives an idea about the growing fetus. Then consumption of the alcohol. It is a big issue in the second trimester, not in the first trimester. Second trimester, it is very big issue. Quite common in the Western countries. Okay. Then you have to, in the second trimester, you have to look into oligo and polyhydramnios. Both are dangerous. Oligohydramnios leads to so many renal problems. And polyhydramnios, to a certain extent, it leads to upper GIT congenital abnormalities like interstitial atresia, etc. Okay, so that means if there is polyhydramniosis, upper GIT abnormalities are common. It may be biliary atresia, intestinal atresia, or problems related to congenital abnormalities related to the stomach, esophagus, esophageal fistulas, and these problems are more common when there is polyhydramniosis. And oligohydramniosis usually result in renal problems, especially lower GIT problems. Lower GIT, congenital megacolon maybe, or infiltrated anus, or polycystic kidney, and some other renal problems. So they are quite common in oligohydramniosis. So this is second trimester where we have to check all these things. Oligo means less amniotic fluid, because the urine is not working properly, because amniotic fluid is created or produced by the urine of the baby or fetus. Okay, if the renal system is not able to excrete the good amount of the urine, the amount of the amniotic fluid will decrease. So that itself suggests that if oligohydramniosis is there,
there is some problem related to renal area and all. It may not be always. It may not be always. Mostly. Similarly, polyhydramnios means there is more urine formation is there. There is more urine formation is there. Poly. Why? That means the fetus consumes more and more fluids. Okay, because it is floating in the amniotic fluid, so it consumes more and more fluid. And if there is some obstruction in between, suppose you just think about congenital pyloric stenosis. Suppose congenital pyloric stenosis, there is obstruction. So whatever which is amniotic fluid which is consumed by the baby is not passing through the intestine and passing through the renal system, etc. So what happens naturally? The amount of the fluid will going to increase because it is not circulating. It is not circulating because of these problems. Okay. Anyway, we will go in detail later. Okay. So this is a problems in the second trimester. Now, third trimester. When you come to the third trimester, again the infections will be there. Okay. The third trimester, the basic issue is always about the weight gain. Okay, whether baby is gaining the weight or not. And in the third trimester, So slide change. नहीं slide नहीं change किया मैंने, वो लिखा नहीं third trimester का. Okay, so in the third trimester, basic is about the weight gain, and second is about the fetal movement. Okay, of course, fetal movements, the feeling of fetal movements quickening will start in the second trimester itself, but still it will going to increase in the third trimester. Okay, so fetal movement, then fetal distress. Okay, and all these issues are more common. More than that, in the third trimester, the furthermore issues are related to preeclampsia. Okay, in the third trimester, it is preeclampsia, then hypertension and all those issues. Anemia is also a big issue in the third trimester. Similarly, first trimester we have seen that is vomiting. Okay, vomiting and this nausea and what you say motion sickness and all those things, they are common in the first trimester. Now we have to take the obstetric history of the mother. Obstetric history. In the obstetric history, mainly we will go for gravida. We know that everybody knows gravida. Any zygote, how many times formed? It is gravida. ठीक है, वो abortion हुआ या miscarriage हुआ या still birth जो भी है, but एक बार zygote formation हो गया, इसका मतलब है वो gravida. Okay, it's gravida. Okay, then parity means live birth, पता है आपको. Then abortions, then stillbirth, then neonatal death, prematurity, then low birth weight babies, obstructed labors, LSCS, congenital malformations and blood transfusion. These are the obstetric history that you have to ask. Okay, whether mother has got any blood transfusion. Maybe mother is suffering from RH incompatibility, or maybe it is because of anemia, etc. Whether mother has got any congenital malformations. That means baby has got fetus congenital malformations. Scan में पता चलेगा क्या? Whether the delivery is normal or normal delivery, obstructive delivery, or instrumental delivery, or it is LSCS. If it is LSCS, there has got some separate problems. If it is normal, there has got some problems. If it is instrumental, caput succedaneum is common. If it is LSCS, transient tachypnea of the newborn is common. ठीक है, तो सभी चीज में अपना अपना प्रॉब्लम है. Obstructed labors, yes, obstructed labors may lead to breech presentation. Breech presentation हो सकता है, shoulder presentation हो सकता है, ठीक है, and there may be Erb's palsy, the brachial plexus palsy, ठीक है, Klumsky's palsy, Erb's palsy, many problems will be there, or even there may be cephalohematoma. Low birth weight babies, again, low birth weight babies have their own problem. They will problem with the maintenance of the temperature. They will have problems related to feeding. They will have problem related to adjustment. Okay, so a low birth weight problem. Prematurity, again, the jaundice may start earlier. Okay, same problem, low birth weight and prematurity. Neonatal death, previous neonatal death history, that is also important. Death occurring immediately after birth, death occurring at the 2 days, after 3 days, 4 days, 5 days, Jataharani. Each and everything has got its own. Some may be metabolic disorders, inbornness of metabolism, some very severe congenital malformations, very severe chromosomal abnormalities. They may lead to neonatal death. Then stillborn abortions, these are the other things that you have to ask. Now, ठीक है, this is आपको क्या है कि ये जो obstetric history पहली बार है तो पहली बार है, ठीक है, इससे पहले भी बच्चा है तो उसका भी पूछना है ये सब. तो हिस्ट्री ऑफ द करंट प्रेगनेंसी. नाउ नेक्स्ट कम्स, इस प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम था. ये सब में क्या है कि पहले वाला प्रेगनेंसी में भी आ गया.
मदर बोल रहे हैं पहला वाला बच्चा जो लो बर्थ वेट है वो प्रीमेच्योर था, वो भी एलएसएस से हुआ था, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन था, स्टिल बर्थ हुआ था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया था पहले वाले में। आप पूछो कि व्हाट इज द हिस्ट्री इन द करंट प्रेगनेंसी। Current pregnancy, the main things that you have to see is gestational age. Presently, what is the gestational age? Okay. Now, what is the gestational age of the child? According to USG, how much, and according to your assessment, how much? Then weight gain. In this particular pregnancy, what is the weight gain? Total weight gain is about 10 kgs. 6 kgs from the maternal part and about 4 kgs from the fetal part. Total 10 kg minimum है, 10 to 11 है, कुछ बुक्स में लिया है, ठीक है। This weight 6 kgs, total mother will going to get about 10 kgs weight, ठीक है। 6 kg from the maternal side and 4 kgs from the fetal side. फीटस में क्या इन्वॉल्व होता है? फीटस का मिकोनियम ये है, थोड़ा बहुत ये सब है, और मदर का प्लेसेंटा है या बल्कि यूट्रस है, और उसके बाद कवरिंग्स है, एमनियन कोरियन वगैरह कवरिंग्स है, और ये सब है, और थोड़ा प्लाज्मा एक्सपांड होता है, ब्लड एक्सपांड होता है उसकी वजह से, ठीक है। सो टोटल देयर इज 10 kg. So if it is less than 10 kg, again it may be suggestive of nutritional problem, or it may be suggestive of IUGR, or it may be suggestive of preterm low birth weight baby again. Then vomiting, history of vomiting in the first trimester. History of vomiting in the first trimester is quite common, ठीक है। So sometimes this vomiting may be a little bit dangerous in the sense problematic sometimes, okay, because it indirectly affects the nutrition. Now, very important, bleeding. Mother suffering from any bleeding disorders, any bleeding. Now, bleeding from the elsewhere from the side, from the body, bleeding from the vagina. Actually, rule क्या है कि once the LMP आ गया, last menstrual period, amenorrhea आ गया, so उसके बाद vaginal area में कभी blood दिखना नहीं चाहिए। Sometimes जब placental ये हो जाता है तो कभी कभी drops में blood आ जाता है, strains में आता है, staining होता है। Otherwise उसके बाद जब प्लेसेंटा डिलीवरी होता है तभी नेक्स्ट ब्लड आता है। दैट मीन्स वेजिनल एरिया में कभी भी जो है ब्लड नहीं आना चाहिए। इफ इट इज कमिंग, इट इज कॉल्ड एज एंटीपार्टल हेमरेज। एंटीपार्टल हेमरेज इज क्वाइट कॉमन इन द प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स, ओके। मदर इज सफरिंग फ्रॉम प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा एब्रोप्टा प्लेसेंटा एंड सम अदर थिंग्स, ओके, वेयर द ब्लीडिंग इज कॉमन, okay. Sometime mother may be having bleeding disorders like platelet disorders, clotting disorders. That's a different issue, okay. So polyhydramnios, yes, you have to ask about the polyhydramnios. That is very important. Oligohydramnios, yes, that is also important. Oligohydramnios not only leads to the renal problems, it also leads to the dryness of the baby. बच्चे को ड्राई कर लेगा, ठीक है। और एक्चुअली ये जो फ्लूइड है, दिस एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर, जैसे बाइक्स में, कार में शॉक एब्जॉर्बर होता है, जो भी वाइब्रेशन है वो ये फ्लूइड लेता है और बच्चे को सेफ रखता है, फीटस को। But when there is less fluid, now babies directly get affected, okay, and there will be drying effect also, okay? Baby is also having drying effect. Now in the current pregnancy you have to ask about the USG, कितना बार USG हुआ उसका, ठीक है। तो एक बार शुरू में होता है, उसके बाद एनोमली स्कैन होता है, और कभी कभी लास्ट में भी करते हैं। तो एनोमली स्कैन जो यूजुअली 5th मंथ में जो करते हैं, 4th 5th मंथ में करते हैं, वो क्या है, एंड व्हाट आर द स्टेटस ऑफ दैट एनोमली स्कैन, दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड, ओके। नाउ अदर डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर्स, एनीथिंग डन, कुछ डायग्नोस्टिक या जैसे एमाइनोसेंटेसिस किया गया या फीटल ब्लड सैंपलिंग किया गया था, तो इस तरीके का कोई अगर प्रोसीजर आपने किया है तो दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। देन हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लैम्सिया, मैंने बताया था कि व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, ठीक है। हाइपरटेंशन बढ़ते ही हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, बिकॉज ग्रोइंग फीटस इज पुटिंग प्रेशर ओवर दी आयोटा, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ब्लड एक्सपांड होगा, पता है आपको, ब्लड एक्सपांड होगा, ठीक है। जब ब्लड एक्सपांड होगा, क्योंकि ब्लड तो अभी फीटस को भी चाहिए ना, तो मदर ज्यादा ब्लड प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। तो अल्टीमेटली जो भी फीटल ब्लड एक बार तो मैटरनल साइड में तो जाना ही है, तो मैटरनल साइड में जाएगा तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, एंड दैट लीड्स टू द सीरीज, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। देयर विल बी एडिमा, देयर विल बी eclampsia, there may be sometime tremors, seizures, okay, and hypertension, all these things. So such history is there, that has to be asked. Next, any maternal medications, that's important. Mother may be, इसमें लिखा नहीं मैंने, maternal medication, last में लिखा drugs. In the maternal medications, now we have to see whether mother is a known case of diabetes, mother is a known case of hypertension, mother is a known case of bronchial asthma, mother is a known case of epilepsy, mother is a known case of some other autoimmune disorders, mother is a known case of liver problems, ठीक है। So और मदर इज नोन केस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, मदर इज अ नोन ड्रग एडिक्ट। So all these things is very important, because if she is having
Suppose, for example, if she is having one of the example, if she is having bronchial asthma के लिए उसको terbutaline देंगे जो bronchodilator है, ठीक है. This bronchodilator will also go into relax the smooth muscles of the uterus, and as a result there may be preterm delivery. Okay, this is some important thing. Similarly, if mother is suffering from epilepsy will go for anti-epileptic drug. Anti-epileptic drugs will go into the baby fetus and cause some of the oral and gum abnormalities, etc. Mother may be suffering from thyroid problems. Okay, so thyroid problem को मैंने बताया था कि अलग अलग maternal axis मेंटेन होता है, बट हाशिमोटो लाइक डिसीज जिसमें maternal एंटीबॉडी बनता है तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है. So like this, the different types of medications taken by the mother is very important. Now UTI is one of the important cause. Okay, because it is quite difficult to maintain the hygiene in the genital area, especially in female, in the pregnant ladies. So there may be UTI. So UTI may lead to early infection, and baby may get suffer, and fetus also may get suffer, and it may, क्योंकि वहां से जो है सीधा यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से जो है फीटस में कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है. इसमें भी वन ऑफ द कॉज फॉर द स्टिल बर्थ हो सकता है इसमें. ठीक है, ड्रग्स हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया. सो दिस आर द पॉइंट दैट हैज टू बी आस्क्ड इन द करंट प्रेगनेंसी. ठीक है, एक तो हमने पहले पूछा कि आपको ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, पुराना ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री क्या है, वो आपने पूछा. और उसका पहले हमने पूछा कि मैटरनल हिस्ट्री क्या है, मतलब मैटरनल हिस्ट्री क्या है इसी प्रेगनेंसी में, मैटरनल हिस्ट्री फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है. और दूसरा हमने जो पूछा कि प्रेजेंट जो आपका प्रेगनेंसी है इसमें क्या था आपका कंप्लेंट. ओके, नाउ कम टू द लेबर एंड डिलीवरी. ओके, कम टू द लेबर एंड डिलीवरी. So during the time of the labor and delivery, there may be fetal distress. Fetal distress is one of the biggest problems. This occurs in the last part of the delivery. Okay, why fetal distress occur? I have explained many times. I think you may be knowing it. In the last part of the pregnancy, when the uterine muscles start contracting, what actually happens is uterine muscles are contracting. As a part of the uterine contraction, they start contraction. When they're contracting, what actually happens is the uterine artery supplies to the placenta actually. So uterine arteries also get constricted. So when uterine arteries get constricted, naturally what happens is the blood flow to the placenta is decreased. When blood flow to the placenta is decreased, the blood received by the fetus is also decreased. And the waste products from the fetal side is also not coming back to the maternal circulation properly. So जब बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, baby is in the stage, fetus is in the stage of hypoxia. So whenever there is hypoxia, fetal body reflexively stimulates the sympathetic system. And when sympathetic system is stimulated, the intestinal smooth muscles are get constricted and the sphincter will go into relax. So whatever meconium which is present in the fetal intestine is now released into the amniotic fluid. So now amniotic fluid is mixed with the meconium, and we know that in the amniotic fluid itself baby is bathing or flowing. Or floating rather, floating. So it also consumes the amniotic fluid, that also we know. Okay, now the baby is consuming a meconium mixed amniotic fluid, and which may lead to thin meconium or thick meconium aspiration. Okay, so these are some of the problems just by fetal distress. So these problems start in the last part of the delivery. Okay, so fetal distress, you have to see, now we have got different instruments, Dopplers, etc., to see the fetal distress, fetal heart rate and all. Okay, if the fetal heart rate is going more than 140, then it suggests of fetal distress. Or sometimes if the fetal heart rate is very less than 100 or 110, etc., that also suggests that fetus is undergoing distress. एक बार बढ़ने के बाद उसके बाद कम होता है. So that's the important part. Second part is presentation. What is the fetal presentation? Fetus का presentation कैसा है कि वो कौन सा है, vertex presentation है, breech presentation है, shoulder presentation है. Okay, we have to prepare accordingly. If it is vertex presentation, no problem. द मैक्सिमम प्रॉब्लम जो हो सकता है कि वो कॉर्ड अराउंड द नेक हो सकता है और कैपिट सक्सिडोमा हो सकता है, ये है. बट इफ इट इज अ ब्रीच presentation may lead to obstructed delivery, and obstructed delivery may cause so many problems. Okay, like Erb's palsy and all those things. Then mode of delivery is also important. Mode is spontaneous vaginal delivery है या LSCS या instrumental है, that is also very important. Now again you have to look into the one more part, that's PROM, premature rupture of the membrane. Okay, we know that the first part of the or first stage of the delivery start with the rupture of the membrane. Okay, when the rupture of the membrane is there, what happens? Amniotic fluid which is present, so that will flow out. तो अब क्या है कि
फीटस जो पहले तैर रहा था ऊपर, फ्लोट हो रहा था, तो अब वो नीचे आएगा, नीचे आके जो आपका जो पेल्विक ब्रिम है वहाँ पे उसका हेड फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद फीटस धीरे 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 नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड नहीं है अभी. बट इफ दिस स्टेज इज प्रोलॉन्ग्ड, यूजुअली प्राइमी में जो है ये 4-5 घंटा लेता है, ठीक है. सो बट मल्टी में तो ऐसा नहीं, कभी 1 घंटे में हो जाता है या कभी कभी आधा घंटे में हो जाता है. सो इफ इट इज वेरी मच प्रोलॉन्ग, सपोज इफ इट टेक्स डेज टुगेदर 24 आवर्स, देन अभी तो पूरा ओपन है, गेट ओपन हो गया, सो देन आउटसाइड इन्फेक्शन कैन इजीली एंटर इनसाइड. इट मे लीड टू असेंडिंग इन्फेक्शन एंड बेबी मे हैव septicemia at the time of the birth. So baby has to be given with some antibiotics immediately in such condition. So PROM, this has to be asked. बच्चे को ये वाला प्रॉब्लम, सॉरी मदर को ये वाला प्रॉब्लम था क्या, और रप्चर होके कितना देर हो गया था, कितना देर के बाद जो है डिलीवरी हुआ. अबाउट द ड्यूरेशन, सेम थिंग. एमनियोनाइटिस, दैट मीन्स वही है कि इन्फेक्शन कुछ हुआ है क्या. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इफ इट इज एनी एनेस्थेटिक ड्रग्स आर यूज्ड, any of the anesthetic drug. Suppose going for LSCS and all those things, anesthetic drugs may be used. We know that spinal anesthesia is commonly used. Okay, कभी कभी एपिजियोटॉन करने के लिए हम लोकल एनेस्थेसिया भी देते हैं, बट वो बड़ा इशू नहीं है, ठीक है. इट्स नॉट अ बिग इशू. नाउ समटाइम व्हाट हैपेंस इज, समटाइम मदर टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस ऑफ डिलीवरी, शी विल टेक सम ऑफ द मॉर्फिन डेरिवेटिव, सेडेटिव ड्रग है मॉर्फिन डेरिवेटिव्स. तो उसका नाम है, पी से शुरू होता है, मैं भूल गया. मॉर्फिन, मैं भूल गया उसको, उसका नाम है, ठीक है. सो मॉर्फिन डेरिवेटिव, मॉर्फिन इज बेसिकली सेडेटिव है, ठीक है. तो वो बच्चे को भी आएगा, और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ क्या होगा कि बच्चा रोएगा नहीं. आप पूरा इसको मारेंगे, ये करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, बच्चा रोएगा नहीं, बिकॉज इट इज अंडर द सेडेशन इफेक्ट. बट उसका हार्ट रेट सही है, रेस्पिरेटरी रेट सही है, सब सही है. सो दिस इज वन कंडीशन वी हैव फेस्ड मेनी टाइम्स, ठीक है. बहुत सारे बच्चों को हमने देखा कि मदर गाँव से जो आती है, कोई ना कोई एक सेडेटिव ड्रग उसको पीने के लिए दे देते हैं या कुछ भी कर लेते हैं गांव में, है ना. तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि स्पेशली ये जो है मॉर्फिन, हाइफेना, इस टाइप का जो है सेडेटिव ड्रग्स को दे देते हो. एनीवे, देन यू हैव टू लुक एट द अपगार्ड स्कोर. अपगार्ड स्कोर स्मूथ ट्रांसिशन हुआ है कि नहीं, ये हमें इंडिकेट करता है. सो दिस आर दी लेबर एंड डिलीवरी हिस्ट्री. नाउ व्हेन मदर कम्स टू द फॉलो अप, व्हेन द मदर कम्स टू द फॉलो अप विजिट्स, द फॉलो अप क्या, फर्स्ट फॉलो अप में हम आ गया. फॉर एग्जांपल आफ्टर 15 days शी इज कमिंग. सो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो आपको पूछना है. इट मे बी ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन और एनीथिंग. बच्चे को दिखाना है बोल के आते हैं ना कि, तो क्या देखेंगे. सो वी हैव टू आस्क अबाउट द फीडिंग हिस्ट्री, नंबर 1. ओके, विजिट्स में, फॉलो अप विजिट में हमेशा ये इंपॉर्टेंट है कि फॉलो अप विजिट में क्या है कि बच्चों का पहले क्या हुआ, ये सब कोई इशू नहीं है. फॉलो अप में तो यही इशू है. कौन सा, नंबर 1 इज फीडिंग हिस्ट्री, whether baby is taking the feed properly or not, whether mother is getting good amount of feed or not. Nutritional assessment, second, very important. Yes, if mother is getting good amount of the milk and baby is also feeding well, then go for the nutritional assessment. Whatever the height, weight, chest circumference, etc. Then growth chart. Okay, growth chart. Whether height is increasing more than the weight, weight के हिसाब से height कम है, height के हिसाब से weight कम है, growth velocity क्या है, that has to be seen. Next part, you have to educate the mother about the vaccination. Okay, कौन सा वैक्सीन दिया है, कौन सा वैक्सीन नहीं दिया है, कौन सा पेंडिंग है. These are all the things that you have to see in the follow-up visits. Then you have to see the developmental milestones. Okay, कि गर्दन पकड़ रहा है या neck holding है या करवट बदल रहा है. All these things in the follow-up visits. So for the developmental milestones, that assessment is very important, because this is very important for the identification of the ADHD and autism-like conditions at the earliest part. Then aseptic measures, whether mother is taking, these are all the things that you have to see in the follow-up visit. Aseptic measures, mother is taking the aseptic methods or not. Whether she is maintaining the hygiene or not. Hygiene of herself and hygiene of the baby. Then temperature. Temperature is again very important. Even in the bigger babies, that means 1-2 महीने के बच्चे में भी टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एक बार टेम्परेचर लॉस होगा तो बॉडी, बच्चा क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बच्चे को ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा. एनर्जी कहाँ से आएगा, मेटाबॉलिज्म से आएगा. मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा, बच्चा जो खाएगा उससे होगा. सो जो बच्चा जो खा रहा है वो सब अगर इसी तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जा रहा है तो बच्चे का वेट कैसे बढ़ेगा. ओके, सो देयरफॉर इवन द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन थिंग. सेकंड थिंग इज इफ द मदर इज टेलिंग दैट मैं सब कुछ मेंटेन कर रहा हूँ सर, फिर भी बच्चा बहुत ठंडा रहता है, ठीक है, ये कोल्ड रहता है इसका बॉडी, सो देन यू हैव टू इमीडिएटली थिंक अबाउट हाइपोथायराइडिज्म. ओके, हाइपोथायराइडिज्म, कोल्ड इंटॉलरेंस, कोल्ड टॉलरेंस, सो ये सब चीजें आपको देखना है. Therefore, these things are very important. Then vaccination, ये तो हो गया. Then D3 supplementation, vitamin D3 supplement, because ricket is the disease of the
अर्ली इन्फेंसी, ठीक है। रिकेट्स का जो प्रॉब्लम है वो 1 2 3 4 महीने में होता है, ठीक है। तो वहीं पे जो है ग्रोथ प्लेट बनता है, क्या है आपका बोन्स में, है ना, बोन्स में जो ग्रोथ प्लेट बनता है, तो बोन्स का हाइट वगैरह वहीं पे बढ़ेगा। तो इफ चाइल्ड इज हैविंग D3 प्रॉब्लम्स, विटामिन डी प्रॉब्लम एंड कैल्शियम प्रॉब्लम, मे बी बिकॉज ऑफ मेनी इश्यूज, ओके। डाइल्यूटेड मदर, जो काउस मिल्क दे रहे हैं या मदर का मिल्क नहीं दे, एनीवे इन द मदर मिल्क डी, विटामिन डी लेस, वो है बट वो सफिशिएंट है बट लेस है, और सन एक्सपोजर नहीं किया गया बच्चे को, ठीक है। सो यूजुअली नाउअडेज वी प्रिवेंटिव पर्पस सेफ साइड हम जो है D3 में जाते हैं। तो D3 सप्लीमेंटेशन का क्या हाल है, दैट यू हैव टू सी एंड रिव्यू फॉर द रिकेटिक चेंजेस। अर्ली रिकेटिक चेंजेस कुछ आ रहे हैं क्या, हाथ में, पैर में तो नहीं आएगा, हाथ में आएगा। So that also you have to see. Now, routine newborn examination. Again, this is a repetition. पहले हम already देख चुके हैं। History taking and physical examination करना है और उसके बाद exposure to the baby. And अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे in the कौन सा follow-up visit में आपको बोलना है कि how much you have to expose the baby to the sunlight. Exposure of the baby to the sunlight is also very important. At least 20 minutes तक daily जो है बच्चे को सनलाइट गिरना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे बच्चे को रखते हैं वहाँ पे एक विंडो होना चाहिए, उस विंडो से जो है सनलाइट गिरता रहेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये सब छोटे छोटे चीज़ों को आपको समझाना है। फीडिंग में मदर इज ओनली गिविंग द हिंड मिल्क, मिड मिल्क, और जो फॉर मिल्क वाला जो इशू है दैट हैज टू बी करेक्टेड, एंड हाउ शी इज फीडिंग, फॉर हाउ मेनी मिनट्स शी इज फीडिंग, बर्पिंग इज डन और नॉट, ठीक है, आइसोलेशन इज मेंटेन्ड और नॉट। These are some of the very important issues, and especially in the feeding also about supplementation, supplementary food कब देना है, क्या है, that issues should be addressed. Now here in the routine care हो गया, exposure of the baby हो गया, hand wash। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे को टच करने के बाद और टच करने से पहले दोनों बार जो है हैंड वॉश करना है। टच करने से पहले इसलिए करना है कि आप दूसरा बच्चे को अगर टच किया तो उसका इन्फेक्शन इसको आ सकता है, ठीक है। टच करने के बाद भी करना है क्योंकि इस इन्फेक्शन, इस बच्चे का जो भी इन्फेक्शन आपको आ सकता है, दूसरे बच्चे को टच करने से पहले आपको करना है। देयरफॉर यू हैव टू वॉश द हैंड्स वेरी केयरफुली। 8 स्टेप्स है वॉशिंग ऑफ द हैंड, पता है आपको, सर्जरी में LSS करने के लिए जब जाते हैं तो हैंड वॉश करते हैं, आपको पता है। एंड एग्जामिनेशन शुड बी ऑलवेज डन न्यूबॉर्न, एक्चुअली हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, बट एग्जामिनेशन शुड बी डन पोस्ट फीड, उसको दूध देने के बाद, फीडिंग करने के बाद 1 घंटे के बाद करना है। शुरू में किया, अभी दूध पिलाया, अभी एग्जामिनेशन किया, बेबी में वॉमिट एंड देयर मे बी रिगर्जिटेशन एंड सो मेनी इश्यूज, एस्पिरेशन भी हो सकता है। सो यूजुअली प्रेफरेबली हम बोलते हैं कि आफ्टर 1 hour ऑफ गिविंग फीड यू हैव टू गो फॉर एग्जामिनेशन। इन द एग्जामिनेशन डोंट टच द बेबी। यूजुअली एग्जामिनेशन में अगर बच्चा सपोज बच्चा सो रहा है, देन यू शुड नॉट गो बाय द रूटीन कि मैं सिस्टम वाइज करूँगा, नहीं। तो कुछ ऐसे चीज़ों को आप पहले कर लो। फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट, बच्चा एक बार रोना शुरू कर दिया तो हार्ट रेट आप नहीं देख सकते हैं, बच्चे एक बार रोना शुरू कर दिया तो आप रेस्पिरेटरी रेट नहीं दे सकते। सो फर्स्ट आप रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट देख लो जब बच्चा सो रहा है। सो जैसा आप रहे बच्चा उठ गया तो उसके बाद वाला जो भी एग्जामिनेशन है आप वैसे भी कर सकते हैं। बट ये जो चीज़ है स्पेशली ब्रीदिंग्स, एयर एंट्री, देन हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू assess when the baby is crying. So you do these things in the beginning. Now how to hold the baby? बच्चे को पकड़ने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, and many of us don't know, ठीक है। palm supporting the head comfortably, this is the method, okay। तो पिक्चर डालना मैं भूल गया, ठीक है। so क्या करना है कि इसका जो हेड जो है आपका लेफ्ट हैंड का रहेगा, आपका लेफ्ट पाम जो है वो बच्चे का हेड को पकड़ेगा, और आपका जो राइट हैंड along with the fingers and also forearm होल्ड द बैक ऑफ द बेबी। बच्चे का बैक जो है आपका राइट हैंड में रहेगा इस ऑब्लिकली, और बच्चे का जो फेस है, सॉरी हेड है, पीछे से आपका लेफ्ट हैंड से रहेगा, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ होल्डिंग द बेबी, ओके। या तो मैंने जो कुछ लोगों को सिखाया था कि आप हाथ पैर से जो है जिस तरीके से उठा सकते हो, ठीक है, पैर से उठा दो और उसके बाद राइट हैंड को पैर के अंदर ऐसे घुसा दो और वो आ जाएगा आराम से, बच्चा भी कंफर्टेबल रहेगा। एनीवे एक प्रिकॉशन चाहिए यहाँ पे, एनसर्कल द बेबीज अपर लेफ्ट आर्म विद राइट थंब एंड इंडेक्स फिंगर। एनीवे कीप द बेबी इन द रेडिएंट वार्मर विद सेंसर। रेडिएंट वार्मर में एक सेंसर भी होता है, वी नो दैट, ठीक है, और प्रोब बोलते हैं इसको, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोब, ओके। सो रेडिएंट वार्मर, व्हेन यू आर कीपिंग द बेबी इन द रेडिएंट वार्मर, ऑलवेज सेट द टेंपरेचर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल टेंपरेचर है बॉडी का, दैट हैज टू बी मेंटेन। समटाइम मेंटेनिंग द temperature of the baby is quite difficult,
वो कन्वेक्शन और कंडक्शन, ये सब जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीट लॉस है, तो बेस्ट मेथड इज यू मेंटेन द टोटल टेम्परेचर ऑफ द रूम इटसेल्फ, रूम के टेम्परेचर को ही अब हाई में मेंटेन करो, तो नेचुरली बच्चे का टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, क्योंकि बच्चे के बॉडी से बाहर टेम्परेचर लॉस नहीं होगा, कन्वेक्शन कन्विक्शन कंडक्शन ये सब है ना, वो सब नहीं होगा। ओके, so you also maintain the temperature in the radiant warmer and also maintain the temperature of the room, as a room, closed room. Now, healthy baby and sick baby. So how you will identify this baby is very healthy and this baby is sick? ये जो है हमें सबको आना चाहिए. This is very important. Okay. What are the symptoms of, or what are the characteristic features of healthy baby? Healthy baby is always active. It is always active. आपने मुंह में हाथ डालते ही जो है वो सक करना शुरू करेगा. ठीक है, आप टच करते ही जो है वो रिफ्लेक्स दिखाएगा. ठीक है, इट्स मूविंग द हैंड एंड इट इज ऑल्सो क्राइंग. नंबर 1. नंबर 2 इज पिंक इन कलर. हेल्दी बेबी इज ऑलवेज पिंक इन कलर. ठीक है, टोमेटो जैसा पिंक जैसा हो. देन पासिंग ऑफ द यूरिन एंड स्टूल नॉर्मली. अनदर इश्यूज. देन विगरस. इट्स विगरसली क्राई करेगा. जब भी उसको हंगर होगा तो विगरसली क्राई करेगा. ओके, दैट्स डल बेबी इज नॉट सजेस्टिव ऑफ ए हेल्दी बेबी. डल बेबी may be a sick baby. Okay, and that's different. Excessively vigorous baby may be also sick baby in cerebral irritation etc. Then one more important, universal flexion. बच्चे को जब बेड में रखे हैं, it should show the universal flexion. सब उसका फ्लेक्शन में रहेगा. उसका एल्बो फ्लेक्स हुआ है और उसका नी फ्लेक्स हुआ है, उसका हिप फ्लेक्स हुआ है. ठीक है, सो यूनिवर्सल फ्लेक्शन पोजीशन में रहेगा. इफ इट इज नॉट देयर, कि पूरा ऐसे एक्सटेंड पड़ा हुआ है ऐसी, इट मे बी सजेस्टिव हाइपोटोनिया. Then baby will have good reflex starting from sucking, rooting, swallowing, मोरोस, उसके बाद ग्रास प्लस सब जो है उसका रिफ्लेक्स अच्छा रहेगा. एंड ही फीड वेल एंड टॉलरेट द फीड. वेरी इंपॉर्टेंट. ए हेल्दी बेबी ऑलवेज फीड वेल एंड ही इज ऑल्सो टॉलरेट द फीड. ठीक है, फीड वेल करेगा अच्छा तो उसको टॉलरेट भी करेगा. ऐसा नहीं है कि का खा लिया और उसके बाद जो है वोमिटिंग कर लिया और खा लिया और उसके बाद डायरेशन हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट फीड वेल एंड टॉलरेट द बेबी. एंड how to understand? Steadily he gain the weight. Steadily he gain the weight gain. Then a healthy baby is always warm to touch. जब आप टच करेंगे ना तो हल्का सा वार्म रहेगा. So these are some of the important points that a healthy baby is having. A sick baby, we know that exactly opposite to this is sick baby. ठीक है, so sick baby is not active. It may be dull or it may be sometime over irritative. ठीक है, so it is cyanosis color, blue color है. It may be central cyanosis or acrocyanosis रहेगा. And passing of the urine and stool is not up to the mark. So always जब भी आपको मिलता है कि stool is not possible, immediately you have to think about hypothyroidism once, because it's one of the preventable case of a cause of the mental retardation. Then and flexion नहीं है. ठीक है, then feed को अच्छे से कभी कभी पीता है, कभी कभी नहीं पीता है, कभी कभी उल्टी करता है और छोड़ देता है बीच में. ठीक है, all these things. And it is cold touch. सेंटर थोड़ा कोल्ड है बट पेरिफेरी उसका बहुत, सेंटर थोड़ा वार्म है, पेरिफेरी बहुत कोल्ड है. इट्स नॉट अ गुड सिम्टम. ऑफ कोर्स नॉर्मली पेरिफेरल जो है सेंटर से थोड़ा कोल्ड ही रहता है, बट दैट मींस इट्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, 1 डिग्री डिफरेंस रहता है. और पेरिफेरल बहुत ज्यादा कोल्ड है, इट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल. ठीक है, नाउ एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज. दिस इज अनदर, पहले भी हम डिस्कशन कर चुके थे. डिस्चार्ज के टाइम में हमने क्या देखना है, important steps of the discharge. Actually very important is first check the sex of the baby. That is very important. ठीक है, सबसे पहले आप केस शीट में कहीं गलती लिखे होंगे, गलती से हुआ होगा. पेशेंट को पता है, मदर को पता है कि मेल बच्चा है, बट केस शीट में लिखा हुआ है फीमेल बच्चा है. ठीक है, तो ये सब जो गलतियां है, सो यू शुड नॉट डू. सो अगेन चेक दी सेक्स ऑफ द बेबी. समटाइम इट मे बी एम्बिगुअस आल्सो. शुरू में आपने देखा नहीं है, बाद में पता चला कि ये मेल भी नहीं है, फीमेल नहीं है, एम्बिगुअस जेनिटल है. सो देयरफॉर अगेन चेक द सेक्स ऑफ द बेबी. Then ask about the breastfeeding activity at the time of the discharge. You have to ask about the breastfeeding activity. Okay, so ask her about the general activity of the baby, and if she reports any problem, explain the danger signs. So when you are discharged, just ask a simple question with the mother. क्या 7 दिन में कैसा रहा बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत है? Okay, and if she reports sometime बहुत ज्यादा आंटता है, ये पीता नहीं है, पीते पीते जो है 2 मिनट पीता है उसके बाद छोड़ देता है, 2 मिनट पीने के बाद इसको जो है ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाता है. ठीक है, रात को सोता नहीं है. so, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. नाउ एक्सप्लेन विच इज फिजियोलॉजिकल एंड एक्सप्लेन विच इज पैथोलॉजिकल. ओके, सो नाउ दैट्स द मदर फॉर द रिपीटेड फॉलो अप. के लिए बहुत आना बहुत इंपॉर्टेंट है. 15 डेज में
ठीक है, वैक्सीन के लिए तो आते हैं, बट वैक्सीन में क्या है कि शुरू का वैक्सीन होता है 1 महीना 2 महीना 3 महीने में आता है, और उसके बाद जो है वैक्सीन है वो 9 महीने में होता है। ठीक है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, 3 महीने के बाद वो नेक्स्ट 9 महीने के लिए आएंगे। सो इसके बीच में 4 महीना हो गया। 4 महीने में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो इश्यू वहीं पे होता है, क्योंकि 6 महीने के बाद ही जो है हम बाहर का देना शुरू कर देता है, और वहां पे मदर को पता नहीं होता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। 3 महीने तक तो वो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, तब तो पूछ ही लेते हैं वो क्या करना है। ठीक है, बट उसके बाद जो गैप आता है ना, उस गैप की वजह से जो है वो ही टाइम होता है हमें टॉप फीडिंग स्टार्ट करने का, वीनिंग फूड शुरू करने का, और वहीं पे वो नहीं आते, उसके बाद वो आते हैं 9 महीने। ठीक है, तो तब तक बहुत सारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम शुरू हो चुका होता है। और दूसरा, ऑटिज्म को भी पकड़ने में यहीं पे दिक्कत होता है हमें। वो 9 महीने में आएंगे, 9 महीने में वो आएंगे, तो उस टाइम पे क्या है कि वो मम्मा पापा सब बोलना शुरू कर दें, उससे उसका पहले जो क्या है कि आपका जॉर्गन स्पीच और जो है मोनोसिलेबल, सो ये सब मिस हो जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा लैकुन है। इसलिए एटलीस्ट मदर को आप बोलो कि एवरी 1 मंथ शी इन एवरी 1 मंथ शी हैज टू कम फॉर द फॉलो अप इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। देन वैक्सीनेशन शेड्यूल, दैट वी नो, एग्जाम द बेबी फॉर द कार्डियक एब्नॉर्मल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं, ऑलवेज गो फॉर द कार्डियक। ठीक है, कार्डियक एक बार आपको देखना ही है, क्योंकि शुरू में आपने देखा तो आपको पता नहीं चलेगा। एक बार हीमोडायनामिक जो है सेटिंग है वो सेट होने के बाद तो बहुत सारे कार्डियक फाइंडिंग्स आ जाते हैं। शुरू में नहीं आ जाते। शुरू में तो क्या है, आपको तो 140 तक चल रहा है, तो आपको कुछ भी पता नहीं, डग 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 चल रहा है, तो आप क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। बट जब डिस्चार्ज होते टाइम बहुत सारे हीमोडायनामिक चेंजेस सेटल हो जाता है, और अब थोड़ा बहुत तो फाइंडिंग्स आ जाता है, बिकॉज कॉन्जेनिटल कार्डियक प्रॉब्लम्स आर क्वाइट कॉमन इन दी चिल्ड्रन। ठीक है, तो अलग अलग कारण की वजह से, देयरफॉर डोंट फॉरगेट टू कीप दी स्टेथ ओवर दी chest of the baby at the time of the discharge. ठीक है, explain the danger signs. Now this is very important. आप ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चला जाओ, ऐसा नहीं बोलना है। डेंजर साइंस एक्सप्लेन। व्हाट इज द डेंजर साइन? डेंजर साइन इज baby is very cold, baby is passing too much of diarrhea, baby is vomiting more, baby is having convulsion, baby is having cyanosis, baby is having difficulty in feeding, baby is having high fever, baby is having some boils. So ये सब डेंजर साइन होते हैं। अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, तो so this part has to be seen. So these are the danger sign. Okay, baby is not feeding well, baby is having convulsion, baby is drowsy. ठीक है, baby is unconscious for a while, ये 2 मिनट के लिए अनकॉन्शियस होकर वापस आ गए, या कोई कन्वर्शन है, मायोक्लोनिक जर्क है, तो ये सब है। एक्सेसिव स्लीप, ठीक है, मेनी कंडीशन विल बी देयर विद एक्सेस स्लीप। बेबी मूविंग ओनली ऑन स्टिमुलेशन, वैसे बच्चा पड़ा रहेगा बट थोड़ा स्टिमुलेशन दे दे तो थोड़ा मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, दिस इज डेंजर साइन। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बहुत तेज चल रहा है, सांस चल रहा है। देन रेज टेम्परेचर मोर देन 38, हाइपोथर्मिया, सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस, दिस आर ऑल कंसिडर्ड एज डेंजर साइंस। नाउ वी नो दैट लाइफ बिगिंस 9 मंथ बिफोर द डिलीवरी। ठीक है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि बच्चा जब हमारा पास आता है वो 1 डे ओल्ड नहीं है, वो 9 मंथ ओल्ड है। ठीक है, बहुत सारे चीज, उसका न्यूट्रिशन, उसका ग्रोथ जाइगोट से ही शुरू हुआ है। सो एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द 9 मंथ ऑफ द पीरियड also leads to the future problem. So fetal events are considered as past history of the baby. आप पूछ सकते हैं कि न्यूबॉर्न के एग्जामिनेशन हम करते हैं, या कोई भी हम जो है न्यूबॉर्न का केस लेते हैं, जो शॉर्ट केस में या लॉन्ग केस में हमें आता है, तो बच्चे का पास्ट हिस्ट्री में क्या लिखेंगे सर हम? बच्चे का पास्ट हिस्ट्री क्या होता है? जो फीटल इवेंट्स है 9 मंथ में जो होता है, दैट इज बेबीज पास्ट हिस्ट्री, वो बच्चे का पास्ट हिस्ट्री। ओके, मैटरनल, एंटीनेटल, पेरीनेटल हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ द फीटस। सो जो मैटरनल हिस्ट्री आपने पूछा, ठीक है, सो दिस इज, ये सब जो है बच्चे का पास्ट हिस्ट्री है। दिस इज अगेन अ मियर रिपीटेशन, इसमें ज्यादा नहीं है। फर्स्ट स्टेप, यस, व्हेन यू गो फॉर द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहले भी बताया था मैंने, डोंट टच द बेबी एट वंस। ओके, ऑब्जर्व द बेबी फॉर 2 मिनट्स। यू हैव टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन द ऑब्जर्वेशन। बच्चे को आपने टच किया, बच्चा रोना शुरू कर दिया, खत्म, उसके बाद रोना बंद होने तक आप कुछ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट जो है, जस्ट कीप क्वाइट एंड जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्व द बेबी। ऑब्जर्व द बेबी, उसका फेशियल मूवमेंट देखो, उसका रेस्पिरेटरी रेट देखो, और उसके बाद उसका पोजिशन देखो, उसका फ्लेक्शन देखो, और डेक्यूपिटस देखो, ठीक है, उसका मूवमेंट देखो। सो यू कैन ऑब्जर्व मेनी थिंग्स। साइनोसिस देखो, ऑब्जर्वेशन, ये वेदना अध्याय में सब लिखा हुआ है, और मेरा आर्टिकल भी है उसके ऊपर।
ओके, ऑब्जर्व द बेबी फॉर 2 minutes, देन ऑब्जर्व द पोस्चर अटेंड बाय द बेबी, ठीक है, ऐसे द टोनिसिटी ऑफ द लिम्स जो मैंने बोला। इफ द बेबी स्लीपिंग, बेस्ट टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन, बच्चा सो रहा है वही सबसे बेस्ट टाइम होता है ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। बेबी कैन बी ऑल्सो एग्जामिन अंडर द मदर्स लैप ऑल्सो, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मदर का लैप में बच्चे को बैठा के भी आप एग्जामिनेशन कर सकते हो। एसेस द एब्नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द फेस एंड लिप, ठीक है, क्योंकि सटल सीजर्स और सलाम सीजर्स, मायोक्लोनिक जर्क, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स को हम पहले ही देखेंगे, हमें पता है कि हमेशा देखेंगे। तो कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज अगर कोई मिल गया बच्चे में, तो देन यू हैव टू इमीडिएटली आस्क अबाउट द ड्रग इनटेक। पहले भी आपने मैटरनल हिस्ट्री में पूछे होंगे, अगर वहाँ पे कुछ मिल गया तो आपको एंटिसिपेट करना चाहिए इस बच्चे में ये हो सकता है, ठीक है। मदर ने इंडोमेथासिन लिया तो आपको एंटिसिपेशन करना है बच्चे में कार्डियक डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और मदर को टॉर्च इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो आपको एंटिसिपेट करना चाहिए कि मदर बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हिस्ट्री ऑफ पॉलीहाइड्रोमसिस, अपर जीआईटी तो रिपीटेशन है। इसोफेजियल एब्डोमिनिटिस ये भी हो गया। एब्डोमिनिटिस ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का एब्डोमिनिटी हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, डबल नॉट, सिंगल नॉट, ठीक है, प्लेसेंटा प्रेविया एंड मेनी थिंग्स। तो कोनल एट्रेसिया, कोनल एट्रेसिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। कोनल एट्रेसिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ। क्या है कि वो जो है नाक है ना वो बंद हो जाता है, जो कोनस, इंफीरियर कॉन्का, सुपीरियर कॉन्का, ये सब रहता है नाक में, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो पैसेज क्लोज है, तो पैसेज क्लोज है तो जब आप एनजी ट्यूब डालेंगे तो वो जाएगा नहीं अंदर, ठीक है। तो वो वहीं से आपका असेसमेंट शुरू होना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा, कभी कभी तो घुसाते जाते, ठीक है। एंड समटाइम्स देयर बी कोनल एट्रेसिया, क्योंकि वो पैसेज ही ब्लॉक है नाक वाला, ठीक है। कोनल एट्रेसिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जैसे बिलियरी एट्रेसिया होता है वैसे कोनल एट्रेसिया है। एनोटिया, एनोटिया मींस एब्सेंस ऑफ द ईयर लोब। सो ये सब चीजें जो है हमें देखना चाहिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द बेबीज अकॉर्डिंग टू द बर्थ वेट एक और चीज है, ठीक है। अब आप आ जाएंगे, लो बर्थ वेट है, वेरी लो बर्थ वेट है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है, उसका कैटेगरी आपको पता है। 2.5 से लेस है तो लो बर्थ वेट है, ठीक है, और 2 से कम है तो वेरी लो बर्थ वेट है, 1.5 से कम है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है, एलबीडब्ल्यू, It's 1.51. ठीक है। नाउ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द डेवलपमेंट ऑफ द जॉन्डिस, नाउ दिस हैव टू सी, अगर बच्चे का प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म हो गया, विच इज मोर डेंजरस, ऑलवेज पोस्ट टर्म इज मोर डेंजरस, ठीक है। एंड विच इज मोर डेंजरस, ऑलवेज लार्ज फॉर गेस्टेशन बेबी इज ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। नाउ वो पता है बिकॉज उसका रिफ्लेक्स, ये मूवमेंट सब ज़्यादा है तो वो सब होने का चांस है। वो जल्दी बाहर नहीं आया तो वहाँ पे बहुत लपड़ा करेगा अंदर, ठीक है, क्योंकि उसका एक्टिविटी सब बढ़ चुका है। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ द जॉन्डिस। नाउ लो बर्थ वेट है, प्री टर्म है, तो डेवलपमेंट ऑफ द जॉन्डिस विल क्वाइट अर्लियर, ठीक है। यूजुअली टर्म बेबी में जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो 3 दिन के बाद शुरू हो जाता है, बट प्री टर्म और लो बर्थ वेट लेंगे तो वो कभी कभी 2 दिन में शुरू हो सकता है, कभी कभी 1 दिन में भी शुरू हो सकता है। तो दिस शुड नॉट बी कंसिडर एज सेकेंड डे जॉन्डिस। सेकेंड डे जॉन्डिस जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है उसमें कंसिडर नहीं होगा। सो यहाँ पे आपको बर्थ वेट और उसका गेस्टेशन एज गाइड द थिंग्स, ठीक है। प्री टर्म बच्चा है तो डेफिनेटली दूसरा दिन ही उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस शुरू हो जाएगा। देन if the baby is low birth weight baby or very low birth, extreme low birth weight, preterm or small for gestation age, then mortality is very high, then mortality भी हाई रहता है। तो इसलिए बच्चे को जो है स्पेशल केयर आपको देना पड़ेगा। ना IUGR, इंटरनेट ग्रोथ रिटार्डेशन, एक्चुअली इंटरनेट ग्रोथ रिटार्डेशन में क्या होता है कि उसका वेट कम होता है, ठीक है, और पूरा वो 38 वीक्स तक रहा बट उसका ग्रोथ कम है। तो यूजुअली हम सोचते हैं कि इंटरनेट ग्रोथ रिटार्डेशन थोड़ा डेंजरस है, नहीं। जो बच्चा इंट्रा ग्रोथ IUGR है बट फुल टर्म है, फुल टर्म IUGR है, ठीक है, 38 वीक्स हो गया IUGR है। सो ये बेबी सेफ होता है क्योंकि इसको जो है गरीबी क्या है पहले से पता चलता है इसको, ठीक है, क्योंकि इसको जब ये यूट्रस में रहा तभी उसको कुछ खाने के लिए बहुत कम मिला, उसी में इसने सर्वाइव कर दिया। तो बाहर जाने के बाद है ना, इसको जब थोड़ा खाने के लिए ज़्यादा मिलेगा तो ये खुश रहेगा, तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट प्री टर्म में ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभी प्री टर्म IUGR होता है, ये डेंजरस होता है। वो प्री टर्म भी है, मतलब 35 वीक्स में ही आ गया और उसके साथ IUGR भी है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। फुल टर्म IUGR इज वेरी सेफ फॉर द हैंडलिंग, है ना, कुछ नहीं करता, क्योंकि उस देखो एक जब ये गरीब जब अमीर बन जाता है तो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। मतलब ये गरीब है, अमीर बन गया और उसके बाद वापस गरीब बन गया, उसको बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उसको पहले से पता है गरीबी से कैसे लड़ना है। बट एक अमीर जो है सडनली गरीब बन जाता है ना, शुरू से पैदाइश हुआ अमीर है और उसके बाद सडनली वो गरीब बन गया, तो उसको बहुत बड़ा इशू होता है।
IUGR के साथ, फुल टर्म IUGR के साथ ये इशू, तो वो पहले से गरीब था, अभी वो अमीर बन रहा है, तो कोई इशू नहीं है इसको, he will handle well. Now, low birth weight babies, the chance of anomalies, जो भी low birth weight babies आते हैं, chance of anomalies is 2 times greater when compared to the term babies. Anomaly का जो चांस है वो almost 2 गुना ज्यादा है. Now suppose mother is suffering from diabetes mellitus, ठीक है, there will be number of congenital anomalies हो सकता है, starting from heart defects, ठीक है, limb defect, heart defect, skin defect, so वो मैं बाद में बता दूंगा. There is number of, ठीक है. So mother suffering from diabetes during antenatal period. Similarly, mother suffering from cardiac problem, mother इसमें सब में जो है ये आ सकता है. स्पेशली डायबिटीज आजकल कॉमन है, तो कभी कभी डायग्नोस होता है, कभी कभी डायग्नोस नहीं होता है. देयरफॉर वी हैव टू बी कम. इन केस ऑफ डायबिटीज ऑलवेज यू विल गेट मैक्रो बेबीज, ठीक है, बड़ा लार्ज फॉर गेस्टेशन एज बेबी मिलेगा, वेट बहुत ज्यादा मिलेगा. यस, नाउ कम टू द गेस्टेशनल एज असेसमेंट. So gestational age assessment helps to divide the baby into preterm, appropriate term and post term. पता है आपको. Assessment is done by new Bellot scoring system. पहले एक स्कोरिंग सिस्टम था जिसका नाम था Bellot सिस्टम. उसमें उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया और इसको हम बोलते हैं न्यू Bellot स्कोरिंग सिस्टम. इसमें क्या है कि फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल साइंस दोनों हम देखते हैं. कुछ 6 जो है उसमें फिजिकल साइंस है, 6 जो है न्यूरोलॉजिकल साइंस है, ठीक है. सो फिजिकल साइंस में तो बहुत सारी चीज़ें आते हैं, ईयर नोड्यूल, ब्रेस्ट नोड्यूल्स, ईयर कार्टिलेज, उसके बाद टेस्टिस आएगा, स्किन आएगा, मेनी थिंग्स आएगा, वी विल डिस्कस इट. न्यूरोलॉजिकल में जो आता है कुछ साइंस है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर विंडो साइन, स्कारपास साइन, पॉपलेटल एंगल, ये सब आता है. ओके, सो वी विल, बिकॉज गेस्टेशन एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम में भी आता है और ऑफकोर्स पूछते इसी को है और इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. सो ये क्यों है गेस्टेशनल एज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हमें डिसाइड करना है, इसलिए कि दिस विल गोइंग टू गाइड द फ्यूचर मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड. अगर वो प्री टर्म है तो हमारा मैनेजमेंट अलग होगा, टर्म में तो अलग होगा, पोस्ट टर्म में तो अलग होगा, ठीक है. सो मेथड ऑफ मैनेजमेंट, लेंथ ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्री टर्म है तो एंडोट्रेकियल ट्यूब का साइज कम होगा, टर्म में तो अलग होगा, ठीक है, उसका साइज अलग होगा. इंटेंसिटी ऑफ द फोटोथेरेपी, टर्म में फोटोथेरेपी हम 45 सेंटीमीटर गैप में रखेंगे, बट प्री टर्म में तो थोड़ा कम में रखना पड़ेगा. सो बैक एंड मास्क वेंटिलेशन में जो साइज है, मास्क का जो साइज है वो भी डिसाइड. इसलिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एक सडनली जो है सुपरफिशियली बच्चे का गेस्टेशनल एज का एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसी के ऊपर आगे के बहुत सारे स्टेप्स डिपेंड है. गिव द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वेंटिलेटर केयर आल्सो, दिस इज वेरी